बोङ लेप्चा गुम्बा परिसरमा इन्टेक कन्जर्भेसन इन्स्टिट्युट ICIC को प्रिभेन्टिभ कन्जर्भेसन अफ आर्टिफेक्ट्सको 3 दिनव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु। I'm PD Mr. Nadav Sinha from ICI Intac Delhi and Mamta Mishra from ICI Intac Lucknow and Mr. Dharmen sir. We request our chief guest, Mr. Nadav Sinha, to welcome our chief guest. Our chief guest to spread brightness in the ceremony by lighting the lamp. Jaya Devi Sharade Varade Ma Varade Jaya Devi Sharade Varade Ma Varade Gyan Dayini Matu Gyan Dayini Matu Gyan De Ma Gyan De Jaya Devi Sharade Varade Ma Varade Vidya Dayini Matu Vidya Kadan De Nad Brahma Swarupini Charanon Mein Sthan De Jaya Devi Sharade Varade Ma Varade Varade Ma Varade Varade Ma Varade. Lama ji and everyone else who are present here. थोड़ा सा इंटैक के बारे में मैं बताता हूँ। इंटैक इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1985-84 में स्टार्ट हुई थी और main objective of INTAC establishment was to work parallel to the government of India in preservation and conservation of heritage which is unprotected. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसको जो काम करते हैं उसके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सब लोग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर या शॉर्टेज ऑफ फंड्स और व्हाटएवर। तो इसलिए इंटैक को इस्टेब्लिश किया गया था और धीरे धीरे करके इंटैक एक बहुत छोटी सी संस्था थी, वेरी फ्यू मेंबर्स, बट इवेंचुअली आज एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल की एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा पूरा वर्ल्ड में हम लोगों को काफ़ी रिकग्निशन है हमारे काम की। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कई हमारे डिविजन्स हैं जिसमें सबसे पहले तो हमारा डिवीजन आता है आर्ट एंड मटेरियल हेरिटेज जिसको मैं सबसे लास्ट में आपको समझाता हूँ बताता हूँ। उसके बाद आता है आर्किटेक्चरल हेरिटेज जिसमें मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, मॉनेस्ट्रीज या बिल्डिंग्स जो अनप्रोटेक्टेड हैं या जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं उनके लिए हम लोग फंड्स रेज करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, फंड रेज करते हैं थ्रू द गवर्नमेंट और थ्रू प्राइवेट चैनल और उनको हम रिस्टोर करते हैं। और रेस्टोरेशन में इट इज़ जस्ट नॉट कि उठाया सीमेंट या जो भी कुछ लगा दिया, ऐसे नहीं करते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है जिस चीज़ से, जैसे ये गुम्बा है, जिस ओरिजिनल उसमें मड का और लाइम का यूज़ किया गया है, चूना का, तो उसी मटेरियल को हम साइंस के थ्रू रिसर्च करके वही मटेरियल से उसको रिस्टोर करते हैं। सो हैविंग ऑल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर स्टिल वी स्टिल वर्क विद देम। फिर उसके बाद एक हमारा इम्पॉर्टेंट डिवीजन है, वो है नेचुरल हेरिटेज।
नेचुरल हेरिटेज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वाटर बॉडीज से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, इन सब पे काम करते हैं। और अब वो थोड़ा सा और एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसमें वो लैंग्वेजेस वगैरह भी ले रहे हैं, डाइंग, ओरल ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, ये सब भी। तो उसके लिए एक सेपरेट डिवीजन हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो एक और बनाया गया है। So that is working throughout Pan India, documenting each and every language or customs, traditions, dances, whatever. उसके बाद एक हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट डिवीजन है जो है हेरिटेज एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये जो है एजुकेशन पे काम करता है, जिसमें स्कूल के बच्चों से स्टार्ट किया जाता है, कॉलेज लेवल तक के बच्चों तक होता है। इसमें व्हाट इज़ हेरिटेज, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व हेरिटेज, what is my belonging, how I have inherited, how I am supposed to preserve it and pass it on to future generations. ये सब चीज़ हम लोग बच्चों को right from the earlier stage सिखाते हैं, उनके साथ उनके टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो आज हमारा जो नेटवर्क है पैन इंडिया, thousands of schools are associated, और छोटा छोटा वो बच्चे जो है छोटा छोटा काम लिया जाता है, जैसे अडॉप्ट अ ट्री, तो वो उस ट्री के बारे में लिखेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, अडॉप्ट अ बर्ड, अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को दिया जाता है, सो दैट द सेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज दैट प्रिवेल्स इन द चाइल्ड राइट फ्रॉम इट्स हिज चाइल्डहुड। और एक बच्चा, जैसे एक बच्चे को सिखाया गया तो वो अपने इमीडिएट फैमिली को सिखाएगा, अपने आसपास का समाज जो है छोटा मोटा, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको बताएगा मैंने ये किया, मैंने किया। तो धीरे धीरे करके ये मूवमेंट स्प्रेड करता है। सो ओवर लास्ट आई थिंक 10 years or so, lakhs and lakhs of students have been involved in this division. That is very important division of us. Then publications हैं हमारी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे चैप्टर्स हैं जो इंटैक्ट मेन हेड ऑफिस दिल्ली में है, बट हमारी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में है। इस तरीके से हर स्टेट में इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में हमारे चैप्टर्स होते हैं, उनके कन्वीनर्स होते हैं। कन्वीनर्स जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें, आसपास अपने लोकल्स में, गवर्नमेंट में सेंसिटाइज करें, ग्रास रूट लेवल पे काम करें। हेरिटेज वॉक्स बनाई जाती हैं, जैसे कोई अच्छा सा हेरिटेज का एक जगह है जहाँ जाना है, तो उसके लिए ऐसा रूट प्लान किया जाता है जहाँ पे क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको एक्सप्लेन करते हैं, और फिर वो मॉन्यूमेंट पे अगर पहुँचना है तो उसके बारे में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें हेरिटेज बॉक्स में कवर किया जाता है। देन हमारा डिवीजन की आती है आर्ट एंड मटेरियल, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटैक्ट कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट। ये लार्जेस्ट डिवीजन है इंटैक्ट का, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में हमारे जितना बड़ा कुछ और नहीं है। हमारे 5 मेन सेंटर्स हैं, दिल्ली में है, लखनऊ में है, बेंगलोर में है, भुवनेश्वर में है, कलकत्ता में है, और भी हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके उनके वहाँ पे कंजर्वेशन लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश करी हैं। अब जो हमारा डिवीजन काम करता है वो आर्ट या आर्ट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम करता है, जिसमें आप कोई भी ऐसा चीज़, जैसे ये एल्युमिनियम है, ये टेक्सटाइल है, ये ग्लास है, सीमेंट है, हर चीज़ एक मटेरियल है। उस मटेरियल को वो बना कैसे, हाउ दैट मटेरियल हैज़ बीन मेड, हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड टू मेक एन आर्टिफैक्ट। अब ये मान लीजिए एक पोडियम है, अब ये पोडियम 500 years ओल्ड है, मान लीजिए ब्रिटिश एरा का है या फिर मुगल एरा का है, तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा ये बना कैसे है, ये खराब क्यों होता है, इसका पानी के साथ क्या इम्पैक्ट आता है, मॉइस्चर जो हवा में है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है, टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर ठंडा ज़्यादा हो गया, गर्म ज़्यादा हो गया, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये ख़राब होता है। लाइट से प्रॉब्लम आती है, जो हमारे कपड़े फेड हो जाते हैं, फॉर डार्कर क्लोथ्स इन डायरेक्ट सनलाइट दे फेड, तो बिकॉज ऑफ लाइट इट हैपन्स, अल्ट्रावायलेट रेज इट हैपन्स, सर्टन केमिकल रिएक्शंस, दैट दिस इज कम्प्लीटली साइंस ओरिएंटेड। अब उसको फिर हम समझने के बाद फिर उसमें कंजर्वेशन का ट्रीटमेंट, प्रिजर्वेशन का ट्रीटमेंट करते हैं कि उसका लाइफ जो है अनदर 50 years 100 years और बढ़ जाए, वो खत्म ना हो। खत्म तो एक दिन होना ही है, एवरीथिंग विच हैज़ बीन क्रिएटेड और बॉर्न विल डाई वन डे, बट हमारा इंटरवेंशन की वजह से उसका एज थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ये सब हम काम करते हैं इन वेरी ब्रॉड।
Now, specific to this Gompa, there's this lady Inkit Lepcha, she had come to us in October last year. तो उन्होंने इस गोम्पा के बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा है, इम्पोर्टेंट गोम्पा है, एंड द ट्रेडिशन दैट विच इज़ फॉलोड हियर एंड दैट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट इट. और इसमें जो है वो गिर गया, ऑलमोस्ट गिरने वाली कंडीशन में था बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स. तो हम लोगों ने फिर हमारे पास कुछ फंड्स बचे हुए थे, किसी प्रोजेक्ट्स के कुछ फंड्स बचे हुए थे, तो हम लोगों ने उसको फिर यहाँ पे एक विजिट किया नवंबर में आके इसका असेसमेंट किया. लामा जी के साथ हम लोग एक दिन पूरा बिताया. तो यहाँ पे समझ में आया एक बहुत अच्छा काम जो था कि जो डैमेज जब अर्थक्वेक से हुआ था तो क्रैक्स आ गया था पूरा बिल्डिंग में. तो उसमें वॉल पेंटिंग था, जिसको वॉल पेंटिंग एक्चुअली कैनवस पे है, जिसको दीवार पे चिपका करके उसके ऊपर पेंटिंग किया गया था. उसको इन्होंने उतार के रख लिया था, विच इज़ अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू, क्योंकि इट्स अ हिस्टोरिक एविडेंस, अ रिकॉर्ड जिसको उन्होंने प्रिजर्व कर लिया. तो वो हो गया. प्लस देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स जिसमें बोन के हैं, कुछ और टेक्सटाइल्स हैं, तंखा हैं. तो ये सब चीज़ें हमने असेस किया. फिर हमने सोचा कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे करते हैं, जिसमें हमारे अपने स्टाफ के लोग हैं, वो लोग उन लोगों को इसमें और फर्दर ट्रेनिंग दिया जाए एंड लोकल अप्रोच किया जाए, क्योंकि हर जगह हम लोग नहीं पहुँच सकते. तो इसलिए जितने मैक्सिमम लोगों तक हम ये रीच आउट कर पाए, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर हम बता पाए. जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट है, वो हैंड रिटन जो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, अब वो कट गया, फट गया, कीड़ा खा गया उसको, तो उसको कैसे ठीक करना है या क्या आपको नहीं करना है. जैसे पेपर फट जाता है तो उस पर सेलो टेप लगा देते हैं, प्लास्टिक का जो टेप होता है वो नहीं लगाना है. उसको लगाने से और ख़राब हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ से अबाउट 1 ईयर. तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि एक जैसे बच्चों का है, एक बच्चे से दूसरे से तीसरा पता लगता है, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं यहाँ पे आप लोग हमारे साथ 3 दिन ये काम करें. और उसके बाद हम लोग 1 महीना तो यहाँ पे हैं, ये कभी भी आप आए, देखें, पूछें क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ दिस वर्कशॉप हैज बीन प्लान्ड. एंड हमारा उम्मीद ये है कि 3 दिन में टेक्सटाइल कॉन्जर्वेशन, पेपर कॉन्जर्वेशन, मैन्युस्क्रिप्ट कॉन्जर्वेशन एंड वॉल पेंटिंग्स कॉन्जर्वेशन, इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर कर पाएँ. हमारे साथ डॉक्टर ममता मिश्रा आई हुई हैं लखनऊ से, जो स्पेशलिस्ट हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर. तो वो यहाँ पे मेन लीड करेंगी इस प्रोग्राम को. साथ में हमारी टीम के लोग हैं, धर्मेंद्र हैं, मैं भी हूँ. तो हम लोग सब मिल करके आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, कुछ लेक्चर्स होंगे, कुछ प्रेजेंटेशंस होगा, कुछ साइट विजिट होगा, वो सब. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप. हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बोर लगे, हो सकता है थोड़ा आप लगे कि ज़्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं हमको, हम उसको मॉडिफाई कर देंगे. हम इसको प्योर साइंस नहीं रखेंगे क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हम लोग इस वर्कशॉप को कंडक्ट करेंगे. सीमा जी और डॉक्टर ममता जी और हमारा श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी और आप लोगों का वेरी knowledgeable technicians who have come all the way from Delhi, Lucknow, even Kerala, I'm told. Thank you very much indeed for joining us here and educating us. In fact, of course, it is conservation, preventive conservation of artifacts, Lepcha Bum Monastery, but listening to Sir here, and of course our conversation with Sri Dharmendra ji and the other ladies, I think it's very, very educational. And on behalf of the Bum Lepcha Monastery, Gumba, I'm one of the members of this monastery. My grandfather was very much involved with it. My father was involved with it, and I'm also, in a small way, involved in it. So, on behalf of all the lecturers of the Darjeeling and Kalimpong hills, may I welcome you, sir, welcome you, ladies and gentlemen,
ana Surong Sakmor atet kayu rong song abi dorji lepon sa gulon ka ayu alaman athilat ba Sakmor ana gombusa abi president secretary treasurer song abi thilat na ka ari ka kalio ba sam mamit do Sakmor mo alom do kai chonaka sem sakching kat thono katlet ka kaina are jong yug zugong kayun han nong khatmo din ka jalong are seminar na are training na are conservation training na kai so kai dom tanamo I was speaking in lecture because most are lectures and it is very important for me to speak in my own language also. I think that is more than enough lecture. Buddhism, of course here we call it Lamaism. Obviously Buddhism is a very tolerant religion. So it accommodates the indigenous tribal language, literature, culture, traditions, and you name it, because of this, in my mind, and I think I'm clear, because of this monasteries in and around Kalimpong and Darjeeling district, lectures have been able to preserve, conserve, and promote their language, their literature, their culture, their traditions, and the other things. So I'm proud that the lecture Buddhist monasteries are doing very well, and I'm really, really happy indeed to see that the intact from New Delhi has come here again. I said again, I will come back again to restore, to conserve, preserve, and promote our lecture members. And may I say thank you very much indeed for your dedication, for your hard work, and sooner or later we'll see the results here in the Gumbas. And I'm very thankful to you that a museum of this Bum lecture Gumba is being, of course, it is in the pipeline, and I can see it. Thank you for taking me around, and intact makes the lectures very happy. Thank you very much. Thank you very much. And of course, we the lectures were connected with Intact long time ago. I think it was 2012. And on the outset, I think I must thank our member secretary, Srimati Choden Shirin Misra, IAS retired. She, probably you know or not, we have all manuscripts in lecture language. And we wanted these manuscripts to be translated into English. And we organized one translation workshop, and especially for the publication of 3 lecture manuscripts, translation and publication, your intern helped us to publish it. And most importantly, she was responsible for spreading the lecture manuscript throughout the world, especially in India and abroad also. That was wonderful. Now people know, though, of course, we live in the hills, on the southern part of Mount Kanchenjunga, and it's one of the very far away. It is one of in the remote corner of India. People do not know much about the lectures, but thank you, intern, for spreading the lectures literature, lectures Namtha Namtha, that is manuscripts, and now the lecture monastery, the oldest monastery
in the Kalimpong or Darjeeling Hills. Thank you for that. And may I request you to pass on my gratitude, my thanks to your member secretary for her kind support and work for the lectures. And like this, of course, we will have more contact, we'll have a more good relationship, and thank you for enlightening on different aspects of the work you do for the people of India. We are talking about India. India is a huge country with so many languages, thousands of languages, thousands of culture and traditions. Those who visit overseas, they will know the value of India. And of course, I've spent many years overseas and I've learned that India is India is the richest country, especially in regards to different languages, different culture, different traditions, and it enriches us. In fact, overseas, there are the people, especially in Europe or in America, they are amazed that we have so many languages, so many culture and traditions. And this is really, really good, and we feel very proud about India, our India. And to conserve it, to preserve it, and to promote it, and pass it on especially to the new generation, coming generation. You have been working extremely hard, and I strongly feel that this is the service. Mahatma Gandhi has said that service to man is service to God. You are giving this service, good service, to the lecturers, to other, tribes and other people, and you are, I think, doing a good service, not only to us, but to God also. I'm sure that like me, when you retire, you feel very, very good. That is my experience. You feel good because you have given so much for the Indian language, literature, culture, tradition, and all these things. So I think I said much, but once again, thank you very much indeed for inviting me here today. I wish I could stay here, but I have another engagement. But I feel really good that I'm here today and among you, and I've learned much from you. So thank you very much. And Lada Rongring, strong is a conservation of artifacts, lepchabong, gumba, tinakati, niam, ureka aina sum, saksing tap nado, areka aina yugzuk bonong kachiliokam, lab bonong kachiliokam, ana are Aisha ure this is knowledge. You are gaining knowledge, and knowledge is power, by the way. Don't you forget. Once you have this knowledge, I think you can spread, you can help other monasteries, lecture monasteries, other maybe Tamang monastery or Tibetan monastery or Bhotia monastery or Sherpa monastery or the other, other Gumbas also. So with this knowledge, I think you could serve your people, you could serve the Darjeeling and Kalimpong hills, and be proud what you have done. But most importantly, they are very knowledgeable, skilled ladies and gentlemen here, and to learn. रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबको भर करके हमें वापस करना होगा। लेप्चा गुम्बा विशेष गरेर लेप्चा बम गुम्बा जो चाहिँ एउटा
सबैभन्दा पुरानो लेप्चा गुम्बा हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्ट्याक दिल्लीबाट आएका छन्। उनीहरू खास यो गुम्बाको कन्जर्भेसनको लागि, प्रिजर्भेसनको लागि अनि यो गुम्बामा एउटा म्युजियम पनि खडा गर्नका लागि उहाँहरू आउनुभएको छ र यसै सन्दर्भमा एउटा यो ट्रेनिङ प्रोग्राम यहाँ उहाँहरूले राख्नुभयो, त्यसमा मलाई पनि बोलाउनु भयो र त्यसको लागि हामी धेरै धेरै उहाँहरूलाई धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो यहाँ विशेष गरेर लेप्चा लामाजहरूले र लेप्चा यो बुद्धिस्ट भक्तहरूले आजदेखि उहाँहरूले ट्रेनिङ सुरु गर्नेछ र यो ट्रेनिङबाट विशेष गरेर यो पुराना हस्तलिखित म्यानुस्क्रिप्ट्सहरू छन् त्यसको प्रिजर्भेसन अनि जो थाङ्काहरू छन् अनि जो पनि भित्तामा त्यो लारी भन्छ त्यो लारीहरूको कन्जर्भेसन र यस प्रकारको धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ। त्यसमा पनि यो कन्जर्भेसनको बारेमा उहाँहरू एक्सपर्टहरू दिल्लीबाट आउनुभएको छ, लखनऊबाट आउनुभएको छ, केरलाबाट आउनुभएको छ र यसरी हाम्रा यो लेप्चा गुम्बालाई सुन्दर मात्रै होइन यसको प्रिजर्भेसन र यसको भविष्यको लागि धेरै काम गर्ने उहाँहरूको जो एउटा विचार लिएर उहाँहरू आउनुभयो, जुन मद्दत हामीलाई यहाँ दिइरहेको छ त्यसको लागि हामी इन्ट्याक दिल्लीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद हामी भन्न माग्छौँ। र यहाँ हाम्रो दोर्जिलोपन यहाँका हेड लामा उहाँको तत्त्वावधानमा यो सबै एरेन्ज भइरहेको छ र हाम्रो दोर्जिलोपनलाई पनि म सबैको तर्फबाट हामी बधाई दिन चाहन्छु अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी यो ट्रेनिङ गरेर हाम्रो जति पनि लेप्चा अब यो एउटा सुरु भएको छ, अरू लेप्चा गुम्बाहरूमा पनि यसरी नै फैलिएर जानेछ, यसरी नै कन्जर्भेसन र प्रिजर्भेसनको काम भएर जानेछ भनेर मैले ठुलो आशा राखेको छु। वास्तवमा इन्ट्याकसँग पहिल्यै हाम्रो कन्ट्याक्ट थियो। 2012मै इन्ट्याकले हाम्रो लेप्चा म्यानुस्क्रिप्ट्स 3वटा को वर्कसप, ट्रान्सलेसन वर्कसपको साथसाथमा 3वटा लेप्चा म्यानुस्क्रिप्टको प्रकाशन पनि उहाँहरूले गरिदिनु भएको थियो। त्यसको लागि उहाँका मेम्बर सेक्रेटरी श्रीमती छोदेन छिरिङ मिश्रा रिटायर्ड IAS उहाँलाई हामी रोङहरूको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यसरी इन्ट्याक र हाम्रो लेप्चा गुम्बा बम लेप्चा गुम्बासँग यसरी सम्पर्क भएर यसरी काम भइरहेको छ। यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो, यो हाम्रो लागि ठुलो एउटा सम्बन्ध, एउटा यो यसको उन्नतिको लागि, यसको विकासको लागि जो काम भइरहेको छ त्यसमा हाम्रो धेरै उहाँबाट ज्ञान भएका, टेक्निकल्ली उहाँहरूलाई ज्ञान भएका यसरी आएका छन्, लेडिजहरू पनि आएका छन् र अब यो काम सुरु भयो। यो काम राम्रो हुनेछ। सायद पछि यो म्युजियम सकेपछि तपाईँहरू पनि एकपल्ट आएर यो म्युजियम हेर्ने, देख्ने अनि यसबाट केही ज्ञान लिने अहिलेबाटै तपाईँहरूलाई निमन्त्रण म राखेको छु। र अज्ञाप टक्सी Arizong yok ajak hunam, arium hunam, anaka rongsong atom hunam, ureka kayu intact dom, agyap proximo lilung, kesari apok aring abido palmo achi.